हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिएटर प्लस यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज के मार्केट का परफॉर्मेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 18,165.35 पे आज की क्लोजिंग है, प्लस 112.05 अंक में और 0.62% में। और मार्केट का डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि बुलिश मार्केट ही है और कुछ इस तरह रहा और इस लेवल पे क्लोजिंग है। तो कह सकते हैं कि मॉर्निंग में ये यहाँ पे था और इस लेवल पे गया, फिर एक लेवल ये बनाया और करीब करीब इसी लेवल पे बनता रहा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कभी नीचे ऊपर है, बट इसी लेवल यही है और इसी लेवल पे क्लोजिंग है। अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ओपन है 18,074.30 पे, प्रीवियस क्लोज है 18,053.30 और लो है 18,032.45 और हाई है 18,183.75। अगर हम गेनर्स एंड लूजर्स का ग्रुप देखें तो 50 में से 38 है एडवांसर्स में और 12 है डिक्लाइनर्स में। और एडवांसर्स में 38 में से 35 है 0 से 2% के रेंज में और 3 है 2 से 5% के रेंज में। अगर हम डिक्लाइनर्स देखें तो सभी है 12 के 12 -2 से 0% के रेंज में। अगर हम स्टॉक वाइज देखें तो स्टॉक वाइज आप देख सकते हैं कि गेनर्स की लिस्ट में पहले नंबर पे हिंडाल्को इंडस्ट्री विद +3.08%, देन टाटा स्टील +2.60, L&T लार्ज एंड टर्बो 2.41, यूपीएल 1.83, एचडीएफसी 1.78, एचडीएफसी बैंक 1.77, कोल इंडिया 1.76, विप्रो 1.73, भारती एयरटेल 1.42, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.27, डेविस लेबोरेटरी 1.23, NTPC 1.04. All these above 1%, and there are three above 2%, and that is L&T 2.41, Tata Steel 2.60, and Hindalco is above 3%, 3.08. And if we look at below 1%, stock listed below 1%, that is Grasim Industry, ONGC, SBI Life Insurance, Britannia Industry, Sun Pharmaceutical, ITC, Hindustan Unilever, Axis Bank, Titan, ICICI Bank, Power Grid, Apollo Hospital, SCL Technology, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, अडानी पोर्ट, मारुति सुजुकी इंडिया, एशियन पेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, कोटक बैंक एंड टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एट द एंड विद +0.06%। तो ये है गेनर्स की लिस्ट। अगर हम लूजर्स की लिस्ट देखें तो इन लूजर्स लिस्ट टाटा मोटर एट द फर्स्ट पोजीशन विद -1.66%, देन एचडीएफसी लाइफ -1.38, अल्ट्राटेक सीमेंट 1.28, अडानी इंटरप्राइज 1.17। ऑल दिस एबव 1%, और इससे ऊपर कोई है भी नहीं, 1 से 2 के रेंज में ही है मैक्सिमम। और अगर हम इससे नीचे देखें कि 1% से कम वाले में, तो इस लिस्ट में भारत पेट्रोलियम, नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक, सिप्ला, बजाज फिंसर्व, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री एंड एसर मोटर एट द एंड विद -0.07%। इफ यू लुक एट टेक्निकल चार्ट ऑफ निफ्टी 50, then you can see how candle appear today, and this is 5-minute candle, and you can see here कि जहां हमने कल बात किया था इस लेवल पे, तो इस लेवल पे क्या था और ये ऊपर की तरफ ही था सभी डायरेक्शन। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये ऊपर की तरफ रहने के चांसेस हैं, तो एग्जैक्टली वैसा ही रहा आज का डायरेक्शन और ये ऊपर की तरफ ही रहा। और यहाँ पे ठीक है, लास्ट में रेड कैंडल हमने देखा तो ये दो जो बने थे कि हो सकता है नीचे की तरफ जाए, बट क्या है कि श्योर शॉट नहीं कह सकते कि मतलब ये ऊपर ही जाएगा नीचे जाएगा। तो थोड़ा इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट किया था कि ऊपर जाने के चांसेस है, तो वैसा ही रहा और अभी भी डायरेक्शन ये बुलिश ही है। और अगर हम लास्ट में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लाउड को टच किया था, फिर वापस से ऊपर की तरफ गया और थोड़ा सा ये क्लाउड के ऊपर ही है। और अगर हम करंट इंडिकेटर से देखें तो लेगिन स्पैन भी यहाँ पे अभी ऊपर ही है, सबसे ऊपर है। हाँ ठीक है, ये रेड में बना है तो इसलिए इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और यहाँ पे RSI 51 पे है 2080 के रेंज में, तो अभी है बुलिश मार्केट। और कल मॉर्निंग में देखते हैं क्या रहता है। इंडिकेटर्स तो बता रहे हैं कि बुलिश है, हो सकता है ऊपर जाए और ये नीचे भी जा सकता है, क्योंकि अब आज जैसे प्लस में है तो हो सकता है कल निगेटिव में जाए माइनस की तरफ, बट ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ये ऊपर की तरफ रहे। तो ये है निफ्टी 50।
का आज का परफॉर्मेंस। अगर हम बीएससी सेंसेक्स देखें तो बीएससी सेंसेक्स 61,045.74 पे आज की क्लोजिंग है, प्लस 390.02 अंक में और 0.64% में। अगर हम डायरेक्शन देखें मार्केट का तो आप देख सकते हैं कि जहाँ निफ्टी 50 में भी इसी तरह का था कुछ, कि यहाँ पे गया था बट थोड़ा सा ये चेंज है कि इस लेवल पे जाके फिर वापस किया यहाँ पे और इसी लेवल पे कारोबार करता रहा। ठीक है, थोड़ा वोलेटिलिटी है यहाँ पे और इसी लेवल पे क्लोजिंग है। If we look at overall performance of BSE Sensex, then you can see open at 60,716.03 and previous close 60,655.72 and today's low 60,569.90 and high 61,110.25. And if we look at gainers and losers group, then you can see in 30, 24 in advancers and 6 under decliners, and in 24, 22 under 0 to 2% range and 2 under 2 to 5% range, and all decliners in -2 to 0% range. If we look at stock wise, then you can see in gainers list Tata is still at first position with plus 2.72%, then large and turbo 2.41, HDFC 1.74, Wipro 1.78, HDFC Bank 1.76, Bharti Airtel 1.42, NTPC 1.04. All these above 1%, and L&T and Tata still above 2%, and others below 1%. You can see in this list ITC, Axis Bank, Hindustan Unilever, Sun Pharmaceutical, Power Grid, Titan, ICICI Bank, Dr. Reddy's Laboratory, Tata Consultancy Services, SL Technology, Infosys, Maruti Suzuki India, Bajaj Finance, Tech Mahindra, Asian Paints, Mahindra and Mahindra, Kotak Bank. Kotak Bank at the end with plus 0.07% in gainers list. And if you look at losers list, then you can see in losers list Ultratech Cement at the first position with minus 1.28%, and this is only one above 1% in losers list, and others below 1%, that is IndusInd Bank, Nestle India, Bajaj Finserv, State Bank of India and Reliance Industry at the end with minus 0.16%. If we look at technical chart of BSE Sensex, then you can see the technical chart how 5 minutes candle appeared today, and this is a clearly bullish upside market. And as we seen yesterday here, we seen that these two candle was appeared, and in morning this was a green candle, but this was not proper candle, and suddenly red candle appeared. But then from here direction, market direction goes upside, and you can see how work today. And at the end, as we seen in Nifty 50, there was a red candle and here green, and that is third candle for 1, 2 and 3, and all the direction is indicating that it may be in upside tomorrow morning, and this is a bullish market. And RSI also at 53 in 20 to 80 range, and if at 53 means we can say at middle position, and chances to go upside or low side, but all indicators indicating that it may be go upside, but let's see what's happening tomorrow. और अगर हम मार्केट अदर मार्केट देखें तो इंडेक्सेस एंड एनएससी चेंज, then you can see here Nifty Metal at the first position with plus 1.65%, and this is only one with above 1%, and others indexes below 1%, that is Nifty Financial Services, Pharma, Mid Cap 50, India Manufacturing, Mid Cap Select, Nifty 50, Nifty Private Bank, Nifty Bank, Nifty Mid Cap 100, 200, 100, all these above 0.5%. You can see only there was only one above 1%, but all these above 0.5% in half and 1% range, and below this you can see here, and that is Nifty 500 total market, mid cap 150, IT, FMCG,
you can see that majority in green today. And if we look at losers, then you can see in losers India VIX minus 1.51 and India VIX in minus, then market in plus. And Nifty PSU Bank today in minus 1.25%, more than 1%, and only one below 1%, that is Nifty Auto minus 0.03%. And if we look at BSE indexes and change, then you can see here BSE metal plus 2.44%, that is good, very good. And then capital goods 1.46, industrial 1.24. Here you can see 3 above 1% and metal is above 2%. And in NSE there was only one, and others below 1% you can see in this list: telecom sector, Bharat 2020, consumer durable, sensex, finance, sensex 50, basic material, BSE 100, healthcare, tech, large cap, large cap 100 TMC, and Bankex, BSE 200, all these above half percent and half percent, means half to 1% range. And others below 1% you can see in this list: large mid cap 250, 500 all cap, mid cap FMCG, all this in green below 1%. And in this list you can see majority in green also in BSE indexes: IT, mid cap 400, mid cap Slack, next 50, Sensex next 50, all this. And if we look at red means losers indexes, then you can see here BSE utilities at the first position, maximum losing is minus 0.45%, and then auto 0.07, power 0.06, realty 0.06. These, all these in red, in losing position. And this is all the indexes. And now we are going to discuss one from NSE. And in NSE, Nifty metal at the first position with 1.65%. Today's closing at 6905.80, in number 112.30, and in percentage 1.65%. And you can see the direction how market work today. And as we can see in morning here, and for some time goes here, but suddenly came back and whole day working in bullish direction. And if we look at overall performance, then you can see open at 6814.25, previous close 6793.50, and today's low 6806.55, and today's high 6919.60. And if we look at gainers and losers group, then you can see in 15, 12 under advancers and 3 under decliners, and in 12 5 under 0 to 2% range and 7 under 2 to 5% range. And that is very good if there are 7 in 2 to 5% range, and in decliners all 3 under minus 2 to 0% range. If we look at stock wise, then you can see in this list, in gainers list, Wellspun Corporation at the first position with plus 4.73%, then APL Apollo Tubes 4.09, Steel Authority of India 4.07, all these above 4%. And then Hindustan Zinc 3.97, Hindalco Industry 3.08, Tata Steel 2.60, Jindal Steel 2.59, Vedanta 1.95. You can see in 3 to 4 range there are two, Hindustan Zinc and Hindalco Industry, then 2 to 3% range Tata Steel and Jindal Steel, and then below 2% you can see here Vedanta 1.95, Hindustan Copper 1.75, JSW Steel 1.25.
0.27, and below 1%, that is National Aluminium Company Limited 0.89 and MOIL 0.86. and you can see कि कोई ऐसा नहीं है जो कि आधे प्रतिशत को भी टच करता हो, सभी अच्छी खासी बढ़त के साथ है, करीब करीब 1% ही आप देखें तो 86 है, 0.86, 0.89. And if we look at losers list, there are three. At the first position, Adani Enterprises minus 1.17, then Ratnamani Metals and Tubes 0.32 and Jindal Stainless 0.27. तो यहाँ पे भी अडानी इंटरप्राइज एक ही है जो कि 1% से ज़्यादा की गिरावट में है. तो दिस इज निफ्टी मेटल टुडेज परफॉर्मेंस. And now we are going to discuss one from BSC indexes. Here we have already discussed metal. Therefore, in BSC we are going to discuss capital goods. And you can see capital goods closing at 35,061.46, in number 503.16, in percentage 1.46%. And you can see the direction. From here you can see for some movement goes in this direction, but suddenly it's going upside and bullish market. And if we look at overall performance, then you can see open at 34,677.88, previous close 34,558.30, and today's low 34,507.82, and today's high 35,125.95. And if we look at gainers and losers group, then you can see in 25 12 in advancers and 13 in decliners. तो यहाँ पे आप नंबर्स में तो देख सकते हैं कि 12 ही है प्लस में और 13 है माइनस में, बट वो क्या है कि बढ़त में मायने रखता है कि कितना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन एडवांसर्स 12 में से 10 है 0 से 2% के रेंज में और 2 है 2 से 5% के रेंज में. एंड इन डिक्लाइनर्स in 13 12 in -2 to 0% range and 1 under -5 to 2% range. And if we look at stock wise, then you can see in gainers list Siemens at the first position with +4.40%, then L&T large and turbo 2.41, and then all these two above 2% and 4%, and after that Carbondum Universal 1.82, ABB 1.64, Vale 1.38, Polycab India 1.34, Bharat Forge 1.03, all this above 1%, and others below 1%. You can see in this list Sona BLW Prison 0.39, Honeywell Automation 0.57, Finolex Cable 0.48, Thermoex 0.41, and Timken India 0.09%. And if we look at losers list, as we seen, there are 13 in losers, max than gainers. And in this list, KNR Construction at the first position with -1.86, AIA Engineering -1.95, Suzlon -1.80, SKF -1.67, Grindwell Norton -1.51, Lakshmi Machine Work -1.39, Schaefer India -1.02. All this above 2% in losers list in minus, and others below 1%. And you can see in this list Graphite India 0.97, Hindustan Aeronautics 0.79, V-Guard Industries 0.71, Ilgi Equipments 0.61, Paraj Industries 0.59, and Bharat Electronics 0.19 at the end in minus. This is a losers list. And overall, this is a BSC Capital Goods today's performance. And now we are going to see top gainers and top losers in all, and in movers all and changes. Then you can see here Kohinoor Foods Limited at the first position with 20%, then RBM Infracon Limited 19.96, and then Alpha Laboratories 19.85, TPL Plastech 19.04,
Secure Credential Limited 18.31. All this you can see is 20%. You can see all these nearby 20. Only one Kohinoor is 20% and others nearby 20. And this is top gainers. And if we look at in this list, Guinea filament at the end with plus 7.55%. And if we look at losers list, top losers all already selected, change also selected. And you can see KPI Green Energy Limited minus 48.33%, then Orient Press 10%, Creative Eyes 9.28, AVZ Logistics 7.53. All these maximum losers. And in this list, you can see at the end Party Cruisers Limited minus 4.99%. This is today's top gainers and top losers, and overall this is today's market performance. तो आशा है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।